यू नो सॉरी, एक काट देना, बट हम लोग बाप बदल के खुश नहीं होते. हमारा एक ही बाप है, वो फ्लोरेंटिनो पेरेज. तो हमारा एक ही प्यार है, वो रियल मैड्रिड. लेस देन 12 आवर्स टू गो दोस्तों, तब ये वीडियो आने वाली होगी. दैट्स वाई एवेंजर्स हैव असेंबल्ड टुडे फॉर दिस वीडियो. वी हैव फ्रॉम बॉम्बे पेनिया धीरी गौदी, वी हैव जितेश ब्रदर, वी हैव द मैड्रिड पंडित से ब्रदर्स सूर्यांश एंड वेदांत. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये सीज़न से हम क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या हम बंदी से जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा है या क्या है, वॉट एवर आर एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शंस फॉर दिस सीज़न, उसकी बातचीत करेंगे. स्ट्रेट अप फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रियल मैड्रिड हैव या हैड जो भी बहुत ही प्यारी नेक्स्ट लेवल ट्रांसफर विंडो. जब ये चीज़ें शुरू हुई थी, राइट नाउ चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं. आई विल स्टार्ट विद वेदांत भाई. क्या लगता है कि पिछले साल जितने हम 3 हफ्ते पहले बार्सिलोना से हार गए ला लीगा, बहुत सारी चीज़ें करेक्ट करने की ज़रूरत थी. डू यू थिंक वी हैव करेक्टेड मेजर ऑफ द थिंग्स, या फिर अभी भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें ठीक होना पड़ेगा बिफोर द ट्रांसफर विंडो? यार आई थिंक मोर और लेस हमने ऐसी साइनिंग्स करी हैं, मेजॉरिटी उनमें से स्टार्ट कर सकती है हमारे लिए. फ्रान गार्सिया एंड जूड बेलिंगम कैन स्टार्ट फॉर अस, बट आई थिंक देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट रियल मैड्रिड स्टिल नीड टू मेक. आई थिंक वी नीड टू ऐड अ स्ट्राइकर जो कि किलियन एम्बाप्पे है, एंड वी ऑल्सो नीड अ गोलकीपर नाउ. एक इमरजेंसी हो गई है रियल मैड्रिड में, जहाँ पर थिबो कोर्तुआ हमारे मेन गोलकीपर एंड प्रॉब्ली द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड इंजर्ड है. तो उसके लिए हमें एक रिप्लेसमेंट चाहिए होगा, एंड एक ऐसा रिप्लेसमेंट जो कि प्रॉब्ली इफ नॉट एट द सेम लेवल अ लिटिल बिट सिमिलर हो. तो एक वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड यू नो आयरनी देखो, मैंने आज रील भी डाली थी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, saying कि we lost Courtois and we lost Benzema in the span of 2 months. These two guys were the main reasons why we won the 21-22 Champions League. And now we don't have them. Probably 22-23 में भी जितने भी हमारे सक्सेसेस हुए हैं, वहां पर कि बेंजेमा और कोर्तुआ भी हुए होंगे. तो इस समय रियल मैड्रिड के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज वी कैन नॉट स्कोर एंड वी कैन नॉट डिफेंड फॉर शिट. तो इस समय आपने जितने भी साइनिंग्स करी, चलो ठीक है, आपने मिडफील्ड में आपने इंप्रूवमेंट्स कर लिया, आपने आर्दा गुलर को लिया है, जूड बेलिंगम को लिया है. दे गेट एन अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर इन योर टीम व्हिच वाज नेसेसरी टू प्ले अगेंस्ट ला लीगास लो ब्लॉक्स. बट स्टिल दिस टीम हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स येट लेफ्ट. राइट बैक भी एक ऐसी एरिया है जहां पर हमने अब तक फिक्स नहीं किया है, ऑल्दो हमने हमारे लेफ्ट बैक एरिया को जरा फिक्स कर दिया है विद गेटिंग फ्रान गार्सिया बैक, बट देयर इज स्टिल अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन इन दिस टीम. इट्स नॉट अ कंप्लीट टीम येट. हाँ मतलब एग्री काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं, बॉक्सेस हैं, वो टिक नहीं हुए अभी तक. देखो मैम, आपको क्या लगता है, हाउ मच डू यू रेट दिस ट्रांसफ़र विंडो? क्योंकि बेंजेमा गया जैसे वेदांत ने बोला, अब कोर्तुआ भी नहीं है, ठीक है, और भी काफ़ी स्टार प्लेयर्स लेफ्ट. आपको क्या लगता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर स्टिल नीड टू बी करेक्टेड एंड योर, मतलब आर यू हैप्पी विद द ट्रांसफर विंडो? I was until yesterday I had a different opinion of the transfer window, और सब बाकी सारे Madridistas जैसे it's the same with me also, because this is something that was unpredictable. मैं एक हमेशा ये सोच रही थी कि हम लोगों one thing we should have done better, और ये भी retrospective ही है अभी तो देखा जाए तो, कि what were we doing with Lunin, right? Because Lunin को हम लोगों ने as a second choice goalkeeper रखा था. At one point, what was it? Were we planning on asking him to sort of be the reserve man for Courtois? क्योंकि last season भी Courtois काफी games he missed because he was injured, and there was this recurring injury risk. So and we were not even playing Lunin in like the other cups in the initial stages of like your Copa del Rey and Super Cup and all of that. वो तो फाइनली जब पुश केम टू शव, लाइक हमको और कोई चारा नहीं था, तो वी हैड टू यूज हिम. सो एंड देन ये होल बात शुरू हुई कि लूनन इज नॉट रियली ही इज नॉट मैड्रिड मटेरियल एंड व्हाट नॉट. सो आई थिंक वी कुड हैव प्लान्ड दैट अ लिटिल बेटर. आई थिंक लूनन का व्हाटएवर ट्रांजिशन, लोनिंग आउट या जो भी है, ये एक हमने आई थिंक वी डिडंट मैनेज दैट प्रॉपर्ली. एंड ऑफ कोर्स ये होल थिंग इज इन रेट्रोस्पेक्ट. अभी कोर्तुआ अगर होता तो हम लोग ये बात करते भी नहीं, because to me he is the best goalkeeper in the world. He has been consistently our best player since the last 3 seasons, I would say. Consistency देखा जाए तो. So with him out, that is a huge blow. So that is the number one thing we have to fix. अब ये है कि हमारे पास limited options है, time, because time बहुत कम है. So realistic limited options करके we have to first fix that. And then we definitely need a number 9. और जैसे वेदांत ने ऑलरेडी बोल दिया है, तो मैं I'll not
go ahead and talk about that again. But we definitely need that, because otherwise preseason में भी देख लो, we leak goals. We are going to leak goals. And again वही बात हो रही है जो last season का, we need someone to finish. When Benzema was not in form, when Benzema was not there, हम वही आके वही हो रहा था कि we would get the ball into the final third. There's no one to finish it. There's no one to finish those chances. It is the same story this time. Joselu, for how amazing he has been and the form he is in, you can't rely on him to be your number 9 if you're Real Madrid. So I think those are the two things we have to plug. मतलब otherwise we are looking at a disaster. काफ़ी चीज़ें जितनी भी अभी बात हो रही है ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड आर इन अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, जैसे हम कल स्ट्रीम में भी बातचीत कर रहे थे. माय क्वेश्चन टू अब शिवराज भाई एंड जितेश भाई. पहले शिवराज भाई तेरे से है, प्री सीजन की बात हुई है, वी आर लैकिंग गोल्स, मतलब द अप टॉप वाले टू लुक वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड, स्ट्राइकर इज मिसिंग. तो तेरे ख्याल से चाहे एम्बापे आए ना आए, अगर एम्बापे नहीं आया था फॉर द फर्स्ट 2-3 गेम्स, तेरे हिसाब से रियल मैड्रिड की लाइनअप क्या होनी चाहिए? आर यू गोइंग विद अ 4-4-2 और 4-3-3? आप होजिलिन को इन ले आओ या फिर रॉड्रिगो को शिफ्ट इन, फेदे वेलवार्दे राइट विंगर. व्हाट इज गोइंग टू बी योर प्लान फॉर द फर्स्ट 3 गेम्स इफ देयर इज नो एम्बापे? यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी, बट द थिंग इज कि वेरी सिंपल, अगर बात करूं मैं करंट टीम के सिनेरियो की, तो रॉड्रिगो इज द ओनली प्लेयर आई फील जिसको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है वो क्या कर रहा है. He actually looks clueless when he is in attack. There are places, of course, I do say that he has scored 30 GA last season, but that is besides the point. Currently जो system है, I think when you need to inculcate these kind of players, अभी जो best possible वो होगा वो ये है कि हम forward defense तो खेल ही रहे हैं, मतलब that is मतलब that's the story, right? अगर तू midfield की बात करेगा, I'll go with कामा चुआ and जूड बेलिंगम वाला midfield, ठीक है. एंड अटैक में जैसा तूने बोला, I'll put Valverde as a right winger जो हमारे को मिडफील्ड में भी हेल्प कर देगा, वर्क्स. Put Joselu as a striker, let Vinny play as a left winger. Don't ask him to be a striker which he is not. If you are asking a player to change the way he plays, you need to have a Cristiano Ronaldo in your team. Vinny does not have that accuracy as a Cristiano Ronaldo, nor he has the maturity abhi. He's a young player still. हम लोग वी फॉरगेट इट कि वो अभी भी 22-23 साल का ही है. रोनाल्डो आया ही 24 का था मैड्रिड में. तो वो चीजें हैं कि हम लोग वो फॉरगेट कर देते हैं. फैक्ट ठीक है, उसको आप इनकलकेट कर सकते हो, जैसे भी करना चाहिए, बट आई थिंक अभी आपको होजेलू जैसा स्ट्राइकर चाहिए, क्योंकि आई थिंक अगेंस्ट स्पेनिश टीम्स होजेलू को आइडिया है हाउ टू प्ले. मतलब अगर उसको स्पेनिश टीम्स के अगेंस्ट ही नहीं खेल पाएगा, देन तो देयर इज नो पॉइंट कीपिंग इट एट रियल. Of course, he is not your typical starter, but अगर तू मेरे से पूछ रहा है currently, I think putting Joselu and Valverde on right wing is a better plan. जितेश भाई आपको क्या लगता है, डू यू अग्री विद सूर्यांश? या फिर 4-4-2 में हमने देखा कि ऑब्वियसली हम उसमें डिफेंसिवली ख़राब थे, बट अगर आप ऑफेंसिवली बात करो तो बेलिंगम का गेम काफ़ी निखर के आया था प्री सीजन में. बेलिंगम हैज़ बीन ऑसम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल. एंड 4-4-2 में फिर हम ये चारों फेदे वेलवार्दे, कामाविंगा, चुआमेनी, बेलिंगम सबको खिला सकते हैं. अब टॉप 2 काफ़ी अटैकिंग और काफ़ी एक यंग पूरी टीम बन जाती है व्हेन वी प्ले दिस 4-4-2. तो व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन दिस लाइनअप थिंग फॉर रियल मैड्रिड द फर्स्ट 3 गेम्स? Wait, for whatever reasons, maybe it's Arda Güler and Bellingham coming in, he wants to play 4-4-2. अभी ये जो 4-4-2 डायमंड खेलना है, I think Denuka and I have both seen this play when Makelele was at the club. उस मोमेंट में ना Makelele was a very big player, not physically, but just he was all over the pitch. तो चुआमेनी को वो करना पड़ेगा, पहले तो वो अपने को प्लग करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा डिफेंसिव मिडफील्डर है, he should be able to cover the entire his half. Because बाकी सब तो भागने वाले गोल मारने के लिए, including your fullbacks who will be attacking fullbacks. The other thing I want to say is that we can try this, and Carlo had done it in his first season as well, कि जब वो आया था उसने कुछ नया ट्राई किया था. तो मे बी कुछ ऐसे गेम्स होंगे जो काफी पेनफुल होंगे देखने के लिए, स्पेशली द लास्ट 2 friendlies that we play were very painful to watch also as a Real Madrid fan. But if you can get to work with those 2 forwards, it will be great. Otherwise, right now जिस तरह उन्होंने खेला है और जिस तरह लग रहा है मुझे, वी डोंट हैव इवन दोस 2 फॉरवर्ड्स. उस पहले टाइम में क्या होता था, 2 फॉरवर्ड्स राहुल या मोरिएंटेस, बोथ गोल स्कोरर्स, बोथ नो हाउ टू प्ले ऑफ ईच अदर, बोथ नो ऊपर लेफ्ट राइट सब वो दे नो ईच अदर वेल. इधर क्या हो रहा है, रॉड्री विनी बोथ आर वेरी टाइनी फॉरवर्ड्स, नो वन इज लाइक अ मैसिव फॉरवर्ड, राइट? सो आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू प्ले टुगेदर अप टॉप. सो डीएम का पोजीशनिंग
और DM की परफॉर्मेंस और अप टॉप 2 की परफॉर्मेंस आर वेरी क्रिटिकल, एंड आई थिंक यहाँ पे हम लोग काफी पीछे है एज कम्पेयर टू, देखो सेंटर मिड में कोई भी खेल सकता है, वो नंबर 10 में बेलिंगहम इज डूइंग जेन्युइनली आई थिंक डिसेंटली वेल, एंड फुल बैक्स तो अटैक करेंगे बिकॉज वो तो मैड्रिड डीएनए में है, और नाउ वी हैव टू एक्चुअल कैंटरानोस इन फ्रैन गार्सिया एंड कार्वाहाल एंड लुकास वास्केस, वो तो उन लोग को तो उनको यू डोंट टेल देम टू अटैक, यू हैव टू टेल देम टू डिफेंड. So that will be the key. If we are the only way we'll be able to pull a 4-4-2 off Diamond is if Chouameni or whoever is playing Kamavinga, whoever is playing DM, and those two guys up top can work it out. Otherwise, it's going to go back to 4-4-3 in by December, Jan. 4-3-3. Exactly. Vidal bhai, if you want to add anything on this lineup thing, 4-3-3 or 4-4-2, you're in favor of? Yeah, I feel more than the formation. I think it's a tactical outlet which needs to improvise from Carlo Ancelotti's end. आप 4-3-3 खिलाओ 4-4-2 खिलाओ doesn't make much of a difference. हाँ, डिफरेंस ये जरूर हो जाता है कि अगर आप 4-3-3 खिलाओ तो विनीशियस को वो वाइड एरियाज में ऑपरेट करने की फ्रीडम मिल जाती है, वो 1v1 सिचुएशंस बनाने की फ्रीडम मिल जाती है. कहीं ना कहीं रोड्रिगो के लिए भी एक सिमिलर हिसाब ही है. वो एक चीज़ है, उसमें मैं एग्री करता हूँ. वहाँ पर आपके अटैकर्स को ज़्यादा सेंट्रली ऑपरेट करना पड़ता है. लेकिन ऑल इन ऑल ओवरऑल अगर एम्बापे आता है देन यू हैव टू प्ले 4-3-3. यू आर नॉट लेफ्ट विद एन ऑप्शन. Yes. फिर आपको प्रोबेबली वैल्वर्डे को स्लॉट इन करना पड़ेगा राइट विंग पे. एंड आई थिंक सूर्यांश ने मुझे ये पॉइंट बोला था कि हम विनीशियस, एम्बापे और वैल्वर्डे को खिला के हमारी पूरी अटैक भी बैलेंस आउट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्वर्डे फिर वो डिफेंसिव आपको बातचीत भी वर्क करेगा, हाँ. देगा. एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब I mean, this could be a very, I would say controversial take. And going by how much I have seen, I think यहाँ पर दो ऐसे बहुत एक्सपीरियंस मादरिदिस्तास हमारे साथ बैठे हैं जो कि प्रॉब्लम मुझसे भी ज्यादा हिस्ट्री जानते होंगे मैड्रिड की. आप लोग मुझे बताओ, कंसिडरिंग रॉड्रिगोस करंट सिचुएशन एंड इट परसिस्ट्स, मतलब ऐसा ही कुछ सिमिलर हिसाब रहता है उसका गोइंग, डू यू थिंक कंसिडरिंग Madrid have Vinicius, Madrid have Mbappe and Valverde does a great job at right wing, डू यू थिंक ऐसा हो सकता है कि अगर एक 100 मिलियन का ऑफर आ जाए या फिर उससे भी ज्यादा का ऑफर आ जाए, आप मतलब क्या आप देख सकते हो मैड्रिड को रॉड्रिगो बेचते हुए? He goes right because it is we sold Ozil, we've sold Di Maria and they were great for us. यार Ozil was the best. जो I still regret, मतलब Ozil and Odegaard were two players जिनको मतलब I'll still cry अगर Odegaard. But Derico ji, for this season, is Rodrigo a मतलब short starter for you or not? That is the question. So I think that Rodrigo brings a certain something जो last season I think ये बहुत apparent था, and that is हमारा, even if we spoke about last season, मुझे याद है on your channel only, about how there is this thing where you try to overcrowd the left, right, which was a strategy we were using because naturally he is also a left winger, तो right पे तो कोई किसी को खेलना नहीं था, and that strategy was working in the sense कि उसमें क्या होता है ना, विनी गेट्स सम ब्रीदिंग स्पेस, वरना क्या हो जाता है कि देयर इज दिस होल सिचुएशन जहाँ पे everybody knows that they need to mark Vinny 3v1 and then Vinny is like tied up for space. He still gets the ball out, but still it is a situation where Vinny को बहुत मुश्किल होता है. That is where Rodrigo used to draw some attention away from Vinny. He used to go into attack and वो वहाँ पे उस मामले में वो बैलेंस आउट कर देता था अटैक को. So but then now the question is कि if Mbappe comes, right, if Mbappe comes, all this is now gone because you don't have this whole situation anymore जो हमारा last year का situation था. So in that I definitely see if a great offer comes our way, Rodrigo will leave because Vinny is our like super boy, and with Mbappe and Vinny being there, Rodrigo either leaves or he again gets slotted a super sub or a bench role if we are looking for depth. Honestly, sorry. No, I wanted to add one point actually about that the formation wala thing. So I think definitely like you guys said, Mbappe aata hai to we are going back to 4-3-3. But with the 4-4-2, right, with the diamond also, I think what will have to happen is and this is encouraging because Chouameni had a very good, I think a good preseason. Like you can see the Chouameni that we signed. That Chouameni in the first half jo tha. So I'm like knocking on wood and everything, but I'm having like that optimistic मेरा optimism level for Chouameni is high this time
The thing is, Carlo needs to play him. मेरा वही है, play Chouameni and don't put like Kroos. Don't make Kroos your Number don't revolve your exactly because that then takes everything out of the like your entire plan goes for a toss. So उसमें मुझे लगता है if we are playing with that formation with Chouameni being there, he adds defensively also. So that kind of takes care of our defensive woes a little bit. And अगर Valverde खेलता है on the right, he also contributes defensively because he runs. Yeah, so he also and Vinny can track back sometimes some games में, जैसे we have seen UCL में against Chelsea etc. 2 seasons back, but still uh, I think that Vinny just needs to play wider on the left. He don't try to make him, जैसे सूर्यांश ने कहा, right? Don't try to make him your like pseudo false nine or any kind of a number 9. He has to play wider because that's how Vinny plays. That's how he has blossomed. That's how he's broken out as a superstar. You can't try and like now not make that work, and that can work with a 4-4-2 also with him playing wider. So I या think तुम that आशा भोसले से कथक डांस नहीं करवा सकते ना, उसको उसको गाना ही एग्जैक्टली करवा एग्जैक्टली सकते हो। बहुत सही बात so चीत। I think वो दोनों का एक मिक्स मुझे लगता है इज अ गुड फॉर्मेशन फिट अगर एम्बापे के बिना खेल रहे हैं तो। हाँ आई गेस दैट सेटलअप्स की भाई फॉर्मेशन में क्या बातचीत होगी। रियल मैड्रिड ने अभी भी 5 साइन कर लिए हैं, 6-7 हो जाएंगे अगर कीपर और एम्बापे अगर आ गए तो। सूरज भाई एक वर्ड आंसर ही, योर फेवरेट ट्रांसफर दिस सीजन फॉर रियल मैड्रिड दैट यू आर गोइंग टू बी क्रेजी कि भाई ये बंदा खेलने वाला है अब रियल मैड्रिड के इन दैट वाइट रॉयल जर्सी। यार everyone will choose Bellingham, but I'll go with Fran Garcia. वेदांत ब्रो। Bellingham, there's no doubt for me. I think the guy is super talented. Probably is going to be the best midfielder of next generation. And he can practically do everything. Matlab, he can win headers. He can win second balls at the same time, create chances, opportunities. So the guy is big, bhai. And the guy can play in a 4-2-3-1. He can play in a 4-4-2 diamond. He can literally play everywhere in the midfield. So the guy is versatile as well. Fits the proper Madrid benchmark, and fits the proper Madrid style. Physical player, lamba chauda player, and he does practically everything. Perfect box to box. So I'm really very hyped up for Bellingham. मैं honestly बोलूँ क्रूस और मॉड्रिच के बाद, मैं बार-बार रिपीट किया जा रहा हूँ ये because that's what I feel. क्रूस और मॉड्रिच के बाद ना मेरे को बेलिंगम से ज्यादा कोई और मिडफील्डर पसंद नहीं आता. Jitesh When bhai, it comes to number 8, we are also considering Chouameni as the transfer of this season. Now please tell me, if we are considering him, now please tell me who is the main guy for you when we talk about No, I him. like Chouameni. I want him to be proper Makelele का बाप, Makelele और जिसका भी बाप रेडोंडो का बाप बनेगा, मैं बहुत खुश होएगा. But I'm with Suryansh bhai. I can't believe it, but yeah, it's so true. Fran Garcia knows the value of this Escudo. उसने बहुत साल spend किए, फिर वो दूर भी रहा है. तो अभी जब ब्रेकअप करके वापस रीपैच अप हो चुका है, तो वो प्यार और होता बाहर है निकल लाइफ गया। में. हाँ, बाहर निकल रहा है. He is a young kid. That position will be sorted by somebody who's one of our own. So it will be a great thing. So for me, I'm really looking forward to Fran Garcia this season, and I really hope he stays fit and does well and just kills it, man. यार अपना बंदा है यार. You know what I mean? Denico ji, just say Joselo for his sake, for that bicycle. Actually, For that bicycle. Oh for man. the bicycle, I actually like Joselu, and he had a really good season. Like he last Yeah. season, he's not coming off of like as a washed player or anything of that sort, because I think it was a good signing. It was a strategic signing, and who knows, it might just save our season. Going by the looks of it, if everything else goes into one big disaster. So I'm definitely very happy with the Joselu signing. I think he's a Yeah. good fit. Wore the Madrid jersey in the UCL final against Liverpool. So yeah, good. Like Joselu, because I can't now say Bellingham or Fran Garcia. I would बचा कोई say नहीं. कि भाई जैसे हमने बीच में ओजिल भाई का नाम भी लिया था, I would say आर्दा गुलार भाई, क्योंकि अभी तक उसको आर्दा 1% भी गुलार. नहीं देखा, 1% भी नहीं देखा, हाँ. और अभी तक किसी ने उसका नाम भी लिया है. तो ही इज अ जनरेशनल टैलेंट भाई की बातचीत है. मोर ओवर बार्सिलोना अगर किसी मिडफील्डर के पीछे जाती है तो वी कैन से कि दैट गाय हैज समथिंग फॉर श्योर वाली बातचीत है उसमें. बट लेट्स क्विकली एंड दिस वीडियो विद द प्रेडिक्शंस. हु इज गोइंग टू विन द ला लीगा, क्योंकि आप लोगों ने कहा है बार्सिलोना बेटर है. अब आप ये बातचीत मत कर देना कि मतलब व्हाट इज योर प्रेडिक्शन, हु इज गोइंग टू द टॉप 4 टेबल ऑफ द क्या कहते हैं ला लीगा, एंड हु इज गोइंग टू बी द टॉप स्कोरर.
Pichichi award winner Zamora Lunin or not, or Real Madrid top scorer? These are the only questions. धेनी को दी आपसे शुरू करते एम्बापे आने के बाद करना था ना ये वीडियो पहले कर दिया एंड देन अभी सबका कुछ पूछ रहा है एवरीथिंग चेंजेस हैं। इन आप लाइक बता अ नहीं, मैटर आप ऑफ देखो वन इसमें बढ़िया साइड है, मैं दो वीडियो Let us निकल जाएगी assume एक। that he's coming. हाँ, Let let us us assume assume, let he's us assume. coming. Then what is your answer? Mbappe, 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 Mbappe. That is the answer. आप विदाउट और विद दोनों बता दो. See, I have to say Real Madrid. I will not say any other team because I'm a Madridista at heart. I will always want and I will always push for Real Madrid to win. So I will say Real Madrid because है मतलब ठीक है सी it's not all a bed of roses लेकिन इतना भी बुरा नहीं है हम लोग अभी जो कर रहे हैं ना we are still digesting the whole Courtois news and whatnot लेकिन there are a lot of other positives also. We have it will be so interesting to see Fran Garcia, who's an attacking left back now, overlap with Vinny and actually see how much he can free up Vinny. It will be excellent to see Camavinga flourish as a midfielder like he's supposed to, meant to. Chouameni coming back into form, Bellingham. We have so many interesting prospects, and हम लोगों को इट्स नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम मैं ये भी नहीं कहना चाहती हूँ बिकॉज हमारे पास ये टाइम बेंच स्ट्रेंथ है थोड़ा बहुत जो लास्ट टाइम का जो डेडवुड इतना सारा था वी हैव गॉटन रिड ऑफ ऑल दैट आल्सो तो ये भी सब these are the things you have to think of वरना तुम वालेहो एंड ऑड्रियोसोला एंड मारियानो Azard ये सब नाम रहते हुए भी it was otherwise useless and now we have options to pick from Quality like option. तो we have quality options to pick from. So itna doom and gloom bhi nahi hai. So I would obviously want to say Real Madrid, and I'll say that. Pichichi, I would obviously want Mbappe if he, assuming he is coming. Pichichi, If Mbappe. Mbappe is not there, then If Mbappe is not there, Lewandowski. Lewandowski. it will obviously be Lewandowski. I mean, there's no two ways about it. So yeah, if Mbappe is not coming, then I would say Lewandowski. And the form that Gamora, I think the form that he's in, I think it will be Ter Stegen, the realistic option. Lekin I would want Bono to win it, and especially if he's coming to Madrid. good one, भाई वेदांत भाई, जल्दी से quickly. Real Madrid wins the league. Barcelona comes second. Atletico third, and fourth will be Betis. I think Mbappe is winning the Pichichi. Clear and uh, Zamora की अगर बात करूँ तो I think it could be Oblak this year returning back. That's right. जितेश भाई, I think Oblak is gonna win it. Wait, yeah, I would rather be wrong, but still support what I believe in. So I will never say Barcelona. They may be stronger on paper, and I've said that. But Real Madrid number one, Barcelona number two, Atleti three, Sociedad fourth. I will go with that. Whoever is Real Madrid number 9 is going to be the Pichichi. If that goes खाली जाता है man. जर्सी तो बिकॉज आई जनरली बिलीव एम्बापे नहीं आएगा ये खाली नहीं जाएगा हम इतने भी गधे नहीं है कि वो नंबर छोड़ दे तो whoever number 9 Ter Stegen man he's in really good form and we are very bad defensively and I think he will win the Zamora but yeah I would just say that I would never and none of us should ever I'm sorry I may sound very preachy right here but none of us should ever bet against Real Madrid because the history books are lined up with examples of how people have written Real Madrid off and we've come back and won it. So और हम लोग सॉरी एक काट देना बट हम लोग बाप बदल के खुश नहीं होते हमारा एक ही बाप है वो फ्लोरेंटिनो पेरेज तो हमारा एक ही प्यारा वो रियल मैड्रिड. Let's go. तो इसको तो रखना भाई. ये तो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, ये तो वीडियो का स्टार्ट है, ये तो वीडियो का स्टार्ट है. यार सूरज बोल यार मैं अगर किचिची की बात करूँ if Mbappe comes then it's Mbappe. Otherwise Lewandowski is winning it because there's no elite number 9 in La Liga as of now. Zamora I am going with this guy क्या बोलते हैं Bono winning it. And I like to add one more category तो होगा most assist and the best player वो Griezmann जाएगा. Griezmann will be the best player in La Liga this season. वो था ही लास्ट ईयर भी वही था. Year भी he was the best player in La Yeah. Liga period. Oh, yeah. Then and what my top 4 looks like is currently if because by Madrid के against I cannot bet यार I support Madrid
Yeah. That's my bias or something like that. You can call it, but okay. Madrid first, Barca second. It will be a very close wala, and Atleti will be third, very close. Fourth will be Sociedad for me. I think David Silva के जाने के बाद at least they will try to give him a good वो farewell की साला इस season तो we'll do something. So for me Sociedad is number 4. दोस्तों ऑब्वियसली भाई एम्बापे और नॉट रियल मैड्रिड आर विनिंग इट फॉर श्योर 100% भाई देयर इज बेलिंगम देयर इज चुआमेन इज बैक द फॉर्म वी वांटेड हिम इन देयर इज फेदे वेलवार्दे हु विल स्कोर मोर देन 12 गोल्स दिस टाइम अराउंड लेट्स गो फेदे वेलवार्दे बैंगर्स आर इन कामाविंगा मिडफील्डर जैसा दिन को हमने कहा था तो भाई आई वांट दिस टीम टू show this class, this young team, to give a very great and the respected farewell to the boys Modric and Cruz. I want them to go home with the trophies in their hands. So for sure Real Madrid should win it. Second Barcelona, क्योंकि यही बातचीत चल रही है. थर्ड एथलेटिको मैड्रिड, यही बातचीत चल रही है. थैंक्स टू ग्रिजमन वाली बातचीत होगी इसमें. फोर्थ आई एम लाइक कि शायद इस बार विला रियल शायद कुछ कर जाए. आई एम सेइंग विला रियल. Pichichi, obviously, if Mbappe comes, then everything belongs to Mbappe. But if he doesn't come, I will go with Vinicius Junior, the main man in the attack. Real Madrid में अगर हम 4-4-2 खेलते हैं तो he will be the forward. Keeping that in mind, अगर Mbappe नहीं आ रहा तो a wild one. Obviously वो winger है और Lewandowski striker है. And just not कि वो Barcelona खेलते हैं इसलिए नहीं, but I feel like कि मेरे को लग रहा है he is going to be the man. और another wild guess मेरा यही है कि जो भी हो, अगर होजिलो को सही टाइम मिला जाए तो ही विल बी इन द टॉप 5 गोल स्कोरर फॉर श्योर 100%. मार्क माई वर्ड्स. जमोरा, Ter Stegen yet again because of the defense he has, because of the player quality he has. और कोर्टो भाई चले गए. These are the वो. और assist Rodrigo, my man, you are not going anywhere, you will stay here. Assist I will be Rodrigo. And star player Bellingham, everything belongs to Real Madrid, motherfuckers. This is the way how I am going to end this video. Thank you everyone for joining in. Love you all. Hala Madrid in Adamas dosto. We are coming. And Corto will be back for the Champions League final. Love you. Love you all. Hala Madrid. Bye bye. Hala Madrid. Wow, Hala let's Madrid. go. Let's go.